this nice introduction. How many of you were there for the previous session on gratitude? Good. Oh, good number of you. Thank you. Thank you. So we see the most important gratitude that we should have is towards our own existence. Because we are alive, we are about to experience things. We might be grudging within our minds. अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है. Yes. But then ultimately the fact is we are alive, we are able to breathe, we are able to eat, we are able to. I'll tell you, for old age people, even to pass motion and urine is a big thing. We are able to pass motion and urine. हम जब उस समय हो जाएंगे 75-80 के, तब हमको पता चलेगा यार सुबह सुबह बाथरूम जाने के लिए भी कितना कष्ट है. अभी बॉडी इतनी मस्त है इसलिए उस कष्ट का एहसास नहीं है. और यू हैव हर्ड अबाउट पाइल्स. यस. सो समबडी हु हैज़ हैड पाइल्स, यस, आस्क दैट पर्सन हाउ इज इट टू पास स्टूल. It is hell. It is hell. So many things that we take granted in our life. Somebody who has got a urine infection, just to pass urine, it's so much trouble. Somebody who has got diarrhea, just to drink water, it's so much trouble. The basic existence becomes such challenging when times are not with us. So today we'll be seeing this wonderful aspect of time management. Yes. Because everything else in life can be got back except for that 1 second that we have lost. जिंदगी में बाकी सब कुछ मिल जाएगा, ये समय का 1 सेकेंड नहीं मिलेगा. And that is why the most judicious thing, we might be spendthrifts. अरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, ठीक है. कई लोग होते हैं, यूजुअली गोवंस के हाथ में पैसा रुकता नहीं है. आया खाया पिया मस्त, और जो होगा वो भगवान जानेंगे. आज आया है ना पैसा, चिकन खाओ, पार्टी जाओ, थोड़ा 2-4 बूज एक्स्ट्रा पियो, मज़े से. सुशेगाद लाइफ, दैट इज़ द गोवन फॉर्मूला. सो गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन गया हुआ समय विल नेवर कम बैक. सो वी सी clock and compass. They are the two most important things in our life. One denotes time and the second denotes trajectory, direction. These two T's, time and trajectory, they are most important to shape our future. You see, the best of terrorists have also managed their time well. Do you think Bin Laden managed 11th September just like that? You remember, na? World Trade Center bombings, yes, by Osama Bin Laden. So has he managed it just like that? No. The pilots that his organization has trained and they have executed such precise things. और ये सब कुछ टाइम टू टाइम होता है कि नहीं? सो वन गिव्स अस टाइम एंड द सेकेंड गिव्स अस ट्रेजेक्ट्री. बोथ आर इम्पॉर्टेंट. टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट and that time can be utilized in the wrong trajectory, in the wrong direction. It will take us towards downfall. So how many of us have faced failures in exam? Let's be honest. I had one back in my 3rd semester and one back in my 5th semester. In both the times I had in one subject 33 out of 100 and 33 out of 100. So why do students fail in exam? It's a big analysis. So what is the typical academic year of a student? It's not the fault of student that he fails.
It's because the year has only 365 days. Let's see how we break it. Sundays, the most obvious thing. Yes, 52 Sundays in a year, and Sundays for rest. How many days left? 313 days left. Next, समर हॉलीडेज, उसमें कौन स्टडी करता है? यस, सो हाउ मेनी डेज लेफ्ट? नेक्स्ट, 8 hours of sleep. If you extrapolate it for 1 full year, 130 days gone. 365 दिन में 24 hours a day, 8 hours you sleep, 1/3 of the day. So 1/3 of the year, 360 में से 120, 130 days gone in sleep. Days left 141. 1 hour daily playing, and that is for good health. ऐसा कोई टाइम पास नहीं. It is required, it's a must. How many days gone? 15. How many days left? Then 2 hours daily for food and daily academic, because chewing properly and swallowing. पता है मम्मी ने सुनाया था बचपन में 32 बार च्यू करने का खाने से पहले. Yes. So only 2 hours daily for food and things like that makes it 30 days less. Days left 1 hour of talking तो बनता ही है भाई. यस, कौन है जो है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? अब गर्लफ्रेंड को 1 घंटा नहीं दिया तो वो क्या बोलेगी? यस, रहेगी ही नहीं. यस, सो 15 days still less, which means 81 days left. Yes, exams, how can you forget? 35 days तो ईयरली एग्जाम ही चलते हैं. यस, डेज लेफ्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, दिवाली, गणेश चतुर्थी, XYZ. डेज लेफ्ट ऐसे कैसे? बिना सर्दी खांसे हुए पूरा साल चलता है क्या? 3 दिन तो बनते हैं, 1 डॉक्टर विजिट तो बनती है साल. डेज लेफ्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर भी हमने बहुत कम रखा है. जस्ट बेयर मिनिमम 2 days. डेज लेफ्ट, and that is so who studies on birthday? So problem for me failing is not me, it is only 365 days. यार ऐसा कैसे करने का? Yes, so the most important part is understand and make your vision, state your mission, and create management. Yes, form a vision, state your mission, and effective time management. You are the driver, you are not the passenger. If you don't have things piled up for you today, somebody else will come and say, hey, मेरे लिए ये कर, and you will have to do. Correct or no? Have you experienced it? अगर आपका खुद का कोई काम नहीं है, दूसरा आके आपको बोलेगा अरे चलिए करते हैं, और फिर आप वो करेंगे जो उसको चाहिए, जो आपको चाहिए वो नहीं करेंगे. So इसीलिए have a vision. If today is there, what am I supposed to be doing today? Keep a daily goal. That's a vision. And then goal is done. But then the strength to achieve it, the endeavor to achieve that daily goal is the mission. Decide where you want to go and draw up a map to reach your goals and destinations.
Now this could be long term goal and short term goal. Always have two goals. एक है लंबा, मुझे IAS बनना है. अब मुझे IAS बनना है, मैं तो अभी 12th में हूँ यार, 6 साल आगे है. वो क्या कर देगा, हमें आलसी बना देगा. IAS बनना है ना, एग्ज़ाम कब है, 6 साल के बाद. अभी क्यों टेंशन लेने का, अभी सो ही जाता है. So there is a long term goal, but then to achieve that long term goal, every long term goal comes through many short term goals. Everyone wants to pass 12th, but unless you go from 1st to 11th, you don't get to 12th. Forget of passing 12th. So every year is your short term goal. या फिर अगर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स या टर्मिनल एग्जाम्स अगर मार्च में हैं, सो देन जैन, फेब एंड मार्च इज योर शॉर्ट टर्म गोल. यस, सो हैव शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड देन टाइम मैनेजमेंट टू गेट देयर. मुझे आज के दिन में इतना कंप्लीट करना है. सिट एंड अचीव. When you sit and achieve what you have thought for yourself, you build confidence. This is the only way to build confidence. Whatever you have thought, you must do for that day. Forget what happens next. आज के दिन मुझे ये चैप्टर्स करने हैं तो मैं ये करके रहूँगा. आज के दिन मुझे ये प्रोग्राम डिकोड करके रखना है तो मैं ये करके रहूँगा. So when we think of a goal and we really exert to achieve it, that is how we build confidence. It is not by keeping goals we build confidence. It is by achieving them we build confidence. And to achieve a short-term goal, you require perseverance. You require strength. Yeah. So this is an important thing: vision, mission, and time management. One time passes, you can get it back. Once time passes, you can get it back. Even you can't get it back, even by paying thousands of dollars. Thomas Edison, yes, he has 1,000 patents on his name. 1,000 patents. The most important thing in the world. Benjamin Franklin, dost thou love life? Then do you love life? Yes. Dost thou love life? Do you love life? क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं? Then do not squander time, for that is the stuff life is made up of. Yes. You have heard that old Kishore Kumar song. आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जाने वाला है. ओ आने वाला पल जाने वाला है. Every single coming bit of time, that speck is going to go. Yes. So value it. It is passing away. It is slipping away. Right now it is slipping away. If you don't catch it, it's lost. What happens to those who do not know how to manage their time? They lose temper as quality of service builds up, quantity of service builds up, and run short of time. Yes. You skip your targets, more targets come. Yes, you have seen, if you are working, you must have experienced when you take a holiday, or those who work and they take a holiday, it's a big tension. 10 दिन के emails पड़े होंगे अभी, वो सब process कर रहे होंगे 4 दिन में. Have you experienced this? Yes. So for those who are working, they go on a holiday. Holiday is good. But 2 days before the holiday finishes also,
जब वो हॉलीडे पे हैं तब भी टेंशन है, अरे पैसा ख़त्म हो रहा है, अरे पैसा ख़त्म हो रहा है, अरे पैसा ख़त्म हो रहा है। और 2 दिन पहले हॉलीडे ख़त्म होने के, अरे अभी ईमेल्स, अभी बॉस, अभी बैकलॉग, हाय राम। सो दोज देन वी लूज टेम्पर एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विस builds up and we run short of time. We collapse mentally and put ourselves into martyrdom, self-pity. Yes, अपने आप को हम शहीद घोषित कर देते हैं। Yes, मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता हूँ। क्यों? जब समय था हमने सही चीज़ें सही समय पे नहीं की। सो मार्टियरडम, मार्टियर मीन्स जो शहीद हो गया। सो समय के खिलाफ जो शहीद हो गया, ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। सो कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम टेबल 2 महीने पहले से आया है, लेकिन हमने पढ़ना शुरू कब किया? 2 दिन पहले। और फिर हम बोलते अरे हुई ही नहीं पढ़ाई। अरे 2 महीने थे ना, नहीं उस समय तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो हमने अभी लिस्ट किए। यस, अभी 2 दिन पहले जागा, अरे क्या होने वाला है, फिर दिन मार्टियरडम। If we waste time, accomplish very little of what we actually wanted to do. If one is an underperformer in life, it is only because of time. If one is an underperformer in life, it is only because of squandering time. अगर हम टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, हाँ बेशक हम फेल हो जाएं, बट कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। यस, what is important is not result. Result will anyways come. What is important is the confidence that result will come someday. As children we have heard that song, हम होंगे कामयाब एक दिन। Yes, you have heard that song. So हम होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब? The process of becoming कामयाब is healthy time management. If we don't do time management, only keep singing हम होंगे कामयाब, many of us including me, we fall in that category. I keep singing हम होंगे कामयाब, but I don't do anything so that I can become कामयाब. Yes, so हम होंगे कामयाब के साथ में उस बारे में एक सशक्त दृष्टिकोण से मेहनत करना, that is also very essential in life. We do things haphazardly with no prior planning, leading to reduced efficiency. Yes. Usually when we work in end time zones, it is always in a matter which is, what do you say, emergency. Emergency mode में हम काम करते रहते हैं। अरे what is breaking today, उसको सबसे पहले जोड़ो, और जो अच्छा है उसको strengthen करना हम भूल ही जाते हैं। Yes. So why do we want to learn time management? To effectively utilize God-given time for the benefit of ourselves and others. अगर हम अपना ही भला नहीं करेंगे, दूसरों का क्या करेंगे? Time is there for our own benefit and for others' benefit also. Then, to organize our life to accomplish the short-term and long-term goals at the right time. Yes. To not waste our time and others' time. ना अपना बर्बाद करिए, न दूसरों का बर्बाद करिए. To learn the art of working smarter and not harder. We don't want to become hard worker. Donkey works hardest, but we call him the dumbest. गधा हो गया है तो, अरे वो इतना मेहनत करता है, उसको क्यों गधा बोल रहे हैं? भाई वो बहुत मेहनत करता है लेकिन वो स्मार्ट नहीं है। लेकिन हमारे इसके ऊपर एक जोक भी है। There was one donkey who was very smart. So what happened is, there was one donkey who was धोबी का गधा,
he used to always carry clothes from here, from the Dhobi's home to the river. The Dhobi would wash and get them back. And after coming back, he would give him the donkey 2 carrots. And this is how his life was passing. So one day, one wild roaming donkey came. And he said, "Hey, my friend, why are you worrying so much for those 2 carrots? 2 कैरेट रोज मिलते हैं, उसके लिए तो अपने गले में पट्टी बांध करके ज़िंदगी भर रुका हुआ है। अरे मैं देख, मैं स्वच्छंद घूमता हूँ जंगल में, जो चाहिए करता हूँ, जितना चाहिए खाता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है?" सो दिस डोंकी सेड, "अरे यू डोंट नो, आई हैव हायर गोल." क्या हायर गोल? सो मैंने सुना, आई ओवरहर्ड माई मास्टर टेलिंग हिज डॉटर, "गंगा, तू इतनी गड़बड़ करती है काम करते समय, अगली बार तू ये गड़बड़ करेगी, मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा." सो आई एम वेटिंग फॉर द डे गंगा मेक्स दैट मिस्टेक एंड माई फ्यूचर इज ब्राइट. Yes. So this is one donkey who was very smarter. But will it actually happen anytime? No. So what is the lesson? The lesson is, majority of our times, our life goes as Alice in Wonderland. You know that cartoon, Alice in Wonderland? Yes. Our life, हम बैठे हम मर्सिडीज, BMW और 3 लाख रुपीस का पैकेज और एक 3 BHK फ्लैट आलिशान, अरे वो सब कहाँ है? ख्यालों में. यस. अभी क्या है? अभी चड्डी में बैठा हूँ. यस. सो दैट्स व्हाई लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग स्मार्टर एंड नॉट एसेंशियली हार्डर. Learn to manage your life without getting unnecessarily frustrated and depressed. Frustration and depression is also a sign of ego. Frustration and depression is a sign of pride. It is just the opposite of pride. When we get too much success, I place myself so much in ahead of others that I get proud. So I am placing myself in front of everyone. That is pride. And when when things don't go according to my way, I place myself far behind others and I go in depression. Yes or no? So basically, being proud and depressed, they are both the opposite axis of the same point. When we see someone who's proud, we feel, hey, he's an egomaniac. But equally true for someone who's depressed. Someone who's depressed, वो अपनी लाइफ में अपने से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पा रहा है. मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ अपने जीवन में, आई एम सो इम्पोर्टेंट फॉर माई सेल्फ, आई डोंट सी एनीथिंग एल्स एंड आई प्लेस माई सेल्फ एट द लास्ट ऑफ एवरीथिंग एंड आई फील डिप्रेस्ड. So we sort of revolt against someone who's proud, and we sympathize with someone who is feeling depressed. But in actuality, they both are opposite axis of the same point. Pride and depression, it's putting me first. Yes. If you don't put me first, you can never be depressed. There are so many things that are happening in life. कितने लोग हैं जो हमसे ज़्यादा गरीब हैं, है कि नहीं? कितने लोग हैं जो हमसे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं? कितने लोग हैं जो हमसे कम तनख्वाह पाते हैं, है कि नहीं? कितने लोग हैं जो हमारे जैसे हाथ पैर जिनका पूरा काम भी नहीं करता, है कि नहीं? Yes. So we are so much better than so many others. But when I keep my own ambitions, aspirations, thoughts over and above everything else, I go into depression. So pride and depression are opposite points of the same axis. Are you getting?
Have you ever faced any of these? I need more time. How many of you? For anything, I need more time. Yes. I want to enjoy my life more. I am always running around. I never have time for myself. How many of us? I am always in crisis because I procrastinate. I postpone. आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों. इतनी भी जल्दी क्या है जब तू जिएगा बरसों. टेंशन क्यों लेने का? There is too much stress. There is too much to do and it's all good. How do I choose कौन सा काम पहले करूं? Yes. If working harder, smarter and faster won't solve it, what will? With me, almost all of us are on the same page. Let's understand. To realize the value of 1 year, ask a student who has failed his or her exams. एक साल उसका गया. To realize the value of 1 month, ask a mother who gave birth to a premature baby. It's a very stressful situation for the mother also and for the baby also. It's trauma. To realize the value of 1 week, ask an editor of a weekly magazine. He's always on the run. Every Sunday he has to come with Sunday Weekly, Sunday Weekly, Sunday Weekly. To realize the value of 1 day, ask a daily wage laborer who has 6 kids to feed. एक दिन काम नहीं करेगा, दिन का 500 रुपये घर नहीं आएगा, पेट कैसे भरेगा? To realize the value of 1 hour, ask the student preparing before exam. To realize the value of 1 minute, ask a person who missed his or her train. Happened to you? हमने ट्रेन जाते हुए देखी, अरे उधर से कोई बार बाय कर रहा है, हम भी यहाँ से बाय बाय कर रहे हैं. Yes. To realize the value of 1 second, ask a person who survived an accident. To realize the value of 1 millisecond, ask the person who won a silver medal in Olympics. It's because of millisecond you lose your gold. Not even second, millisecond. Time is valuable. Let's analyze. हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? We don't know that we can control the way we are, the way we spend our time. That is, we are not drivers of our life. अब तक ये बैठा ही नहीं है कि ज़िंदगी में मुझे कुछ सही में करना है और उसके लिए मुझे अपना जीवन अपने हाथ में लेना है. ये अब तक पूरी तरह से अंदर नहीं बैठा है. I must take charge of our life or my life. Yes. You all must be having at least 2-wheeler licenses, 2-wheeler license, 4-wheeler license. So when you get a new bike or even a bike that you have a sense of responsibility. ना बाबा ये bike है. Yes. That sense of responsibility is there. पापा ने दिया है, कुछ हो गया तो yes or no? So you have a sense of responsibility. That's where you act responsibly. But for our own life, we don't have a sense of responsibility. That's why we don't act responsibly. We have not taken control. We have not yet said, this is my life. I have to make the best of it. कि अब तक हमने अपने आप को एलिस इन वंडरलैंड में बोला है एक्चुअली, लेकिन जीते जागते उसके पीछे मेहनत करते हुए नहीं बोला. Little time for planning. In short,
no system or strategy for managing time. We have never thought of managing time. It's always crisis. सबसे पहले कौन सा क्राइसिस आता है उसको सॉल्व करो, उसके बाद में दूसरा क्राइसिस आएगा उसको सॉल्व करो. सो क्राइसिस मैनेजमेंट में ही हमारा टाइम निकल जाता है. आर यू विथ मी? Yes to all this? We don't realize how much time we waste. Terrible, bro. On an average, let's see how our life goes. For a person who has lived for 65 years of his life, sleep. How much hours? 1/3, 8 hours a day. So 1/3 of the day we sleep. So 65 years में से almost 22 years we have slept. If I live for 66 years and sleep for 8 hours a day, 22 hours I have slept in my life. 22 years. Daily routine 2 to 5 years. In just going to bathroom, washing clothes, this, that, brush, X, Y, Z. Meals 5.5 years. Because we like to chit chat. सिंपल खाना होता है क्या? नहीं. कपड़े हम दिन में एक बार धोते हैं, नहाते दिन में एक बार है, खाना 3 बार खाते हैं. यस. Commuting, going here and there, 5.5 years only in commutation. Work, 16 years of our life go in work. If we work for 6 to 7 hours a day, and we don't work for 6 to 7 hours a day, we work for 10 to 12 hours a day. So this will make it opposite. Yes, if I am working for 12 hours a day of 66 years, 33 years I have only worked. Miscellaneous, बीवी है, बच्चे हैं. Yes, 2.5 years gone there. This is how our life goes. Personal discretion 11 years. जो कुछ बच गया. So on a 66-year road map, 11 years I have with me, which means 1/6 of my life. आज के हिसाब से उससे भी कम, से 1/4 of my life मेरे पास फिर भी है. 1/4 of my life. No, 1/6 नहीं, 1/8. Sorry, it should become less. Yes. अगर हम 1/6 भी कहें तो हमारे पास दिन के कितने घंटे हैं? 24 आवर्स में से 1/6 4 hours I have. Take it less, 3 hours, 2.5 hours. 2.5 hours I have with me for myself. What am I doing there? Watching YouTube, Netflix, Amazon Prime. Yes, managing my Twitter handle, updating my Instagram photos. ये जाता है 2.5 hours में मेरे. Whereas we could be utilizing it very very productively. You see, आज से लगभग 50 साल पहले तक लेखक होते थे, कवि होते थे. आज लेखक और कवि है ही नहीं, क्योंकि इमेजिनेशन किसी के पास बचा ही नहीं है. हर कोई मोबाइल में ही है. यू डोंट हैव टाइम टू थिंक, इमेजिन. यस, ऑल द लिटरेरी जीनियस came 100, 150, 200 years ago. Shakespeare, musical genius. Yes. So when I have time, I'll be able to invest in something creative, right? If I don't have time only, how much time I have? How much time I have? 1/6 of my life. Yes.
उससे भी कम, 4 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे हैं मेरे पास अपने, जिसमें मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है. So effectively, if I can give, you see, this is where the study cycle comes. Scientists have found out that the brain cannot concentrate at one stretch for more than 1 hour 15 minutes on one thing. It is impossible. They don't count movies there. Yes. Because you don't make a living of it. Yes. So movies में हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 बार तीनों सीरीज देख सकते हैं. यस, एवेंजर एंड गेम का फुल सीरीज हम 8 बार भी देख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं. लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब प्रोग्रामिंग करने की बारी आती है, जब मैथ्स सॉल्व करने की बारी आती है, जब केमिस्ट्री के इक्वेशंस जुड़ाने की बारी आती है, तब दिमाग खपता है. एंड देन the brain waves come into action. So I can effectively use my 2 sessions of 1.25 hours. 1 घंटे 15 मिनट के मेरे पास 2 सेशंस हैं, 2.5 घंटे हैं मेरे पास रोज के, 1.25 घंटे के मेरे पास 2 सेशंस हैं. उसमें मैं रोज क्या करता हूँ? And believe me, we all have this. Everyone has this 2.5 hours, 2 sessions of 1.5 or 1 hour 15 minutes every day. And how effectively I use it. Sometimes I may study, sometimes I may read literature, sometimes I may just solve crossword puzzles, sometimes I may do Sudoku. Use it effectively. Sometimes learn how to write a good resume. Yes, so many skill sets are there. How am I utilizing that 2.5 hours? 2 sets of 1 hour 15 minutes daily. That's how it boils down to. What is not time management? Just being busy. गधा मजूरी, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है. यस, और चीज़ें हो गई, अब फाइल पास हो गई, मतलब काम हो गया, इज ऑल्सो नॉट टाइम मैनेजमेंट. Time management means to live a life which creates the quality and not mere quantity. Yes. Let's analyze a very important thing. Say this is life. So you have to fill it with boulders. So you fill big boulders, then small ones, and then you put sand. So you have 3 ingredients with you. You had big rock, you had small rocks, and there is sand. Everything has gone in. Yes. First put sand, reverse way. Then put small rocks. What will happen? Big rocks will remain. Yes. Previously, when I did first filled it with big rocks, everything went. Big rocks went in. जहाँ जहाँ पे बच गया स्मॉल रॉक्स वेंट, उसमें जितना जितना पोर्शन बच गया वहाँ पे सैंड भी चली गई. लेकिन हम जब गड़बड़ किए, यस, सो व्हाट इज दिस? दिस जार इज आवर लाइफ, एंड द बिग रॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी मस्ट डू. The small rocks
are important but not so very urgent things. And the sand is something that can be done at leisure. है नहीं है फर्क नहीं पड़ता. Yes. हमने क्या किया है अभी अपनी लाइफ में? सबसे पहले सैंड भर लिया है. जो लीजर एक्टिविटी है, जिसको कोई मतलब कोई पूछता नहीं है आपने आज व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया क्या, इंस्टा पे आपने हैंडल में कुछ डाला क्या, फेसबुक में अपना नया एक सेल्फी डाला क्या, कोई पूछता नहीं है. लेकिन वो हमारा ज़िंदगी बन गया है. यस. और उसके बाद में हम थोड़े मज़े वज़े कर लेते हैं. लेकिन हमारा खुद का ध्यान, हमारा ऑक्यूपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स, स्पाउस, फैमिली, इस सब में हमारे बड़े बड़े ब्लॉक्स छूट जाते हैं. विथ मी? यस. सो वी आर नॉट एबल टू फिट इन द बिग रॉक्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लाइज इन आइडेंटिफाइंग बिग रॉक्स. जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये समझना ही एक कला है. पहले जानिए व्हाट मैटर्स टू यू मोस्ट इन योर लाइफ एंड गिव एम्पल टाइम, एनर्जी एंड डू दैट थिंग विद लव. यस. So now you see, now you know big rocks, small rocks, and you all have got pen and paper. Now I want all of you in coming some time, 2 minutes or 3 minutes, identify what are big rocks in your own life, the most important things in your own life, and next small rocks, the next important, and sand which can be leisurely done. है नहीं है? Please write down. Individual exercise. Those who have not got books, somebody can give pen, so pen and paper also if possible, or you can write down in your mobiles. Mobiles में notepad है, मोबाइल में notes है. So notes पे what are big rocks, what are small rocks, and what is sand. In your own individual life, no discussion, no looking in somebody else's book. This is your own individual analysis. You have nothing to do in his book. आप अपना लिखिए. What matters to you the most, to you individually the most, is the big rock. What comes second in category is the small rock. And what if done, not done, doesn't matter, is sand. It could be 1, 2, 3, 4, 5 things in any of these things. Big rocks may be 2 to 3, small rocks may be 3, 4, 1, sand might be 1, 2, 3, 4, 5, whatever. So it's not only one thing, you can have many big rocks, many small rocks, lot of sand. Just note down, जो आपके फ्री माइंड में आए वो सब डाल दीजिए, क्योंकि ये आपका ही है.
We'll take a few seconds more. Okay. So we see, if we broadly classify our life into many aspects, this is what our life will become, or we will say this is what, how we are placed in our life. We have a spiritual need, we have a mental need, we have social need, and we have physical need. Physical need, eating, sleeping, recreation, these are all physical needs. Social needs, amongst your peers you want some respect, some cohesion, some admiration from people whom you know. थोड़ा कम कर दीजिए, he has increased it a lot. Mentally, yes, there should be things that drive you, isn't it? Something that really drives you ahead is mentally stimulating. Now, for someone who's more logical, solving maths puzzles or programming is something that keeps him mentally active. Yeah. And a very important aspect is spiritual need. Yes. When things go wrong, where do I find solace? So, if we see, the most important thing is first things first. So, what are first things first? If we refer to our diagram, it refers to the big rocks. With me? If I refer to the diagram, it refers to the big rocks. Yes, do these 5 things. Count the cost. Am I willing to make sacrifice? This is in relation to the big rocks. Yes, something that matters to you the most, am I willing to make sacrifice for it? It has been said, a goal not written is only a wish. So one may have many wishes, but once it is written, or you reaffirm to yourself that this is what I want to achieve. You see, many people, IAS, IPS, UPSC aspirants, they have chart paper stuck all over their wall. Formulae and oh, don't sleep, इधर लिखा रहेगा, इधर लिखा रहे study for 6 hours a day, इधर है गांजा मत फूंक, कुछ भी. So you know yourself and you want to do the best. Hey, today come out of alcohol, don't see that girl. So whatever is your own area of concern, you put your things up there. UPSC is the goal. Don't stop until you reach your goal. Aise. So you keep seeing things and you keep getting motivated. In English there is a proverb, out of sight, out of mind. नजर से हट गया, मन से. Yes. Use momentous moments. Though or thought or new experiences can carry momentum. कुछ नया आपकी लाइफ में, कुछ नया हमेशा होना चाहिए. Something exciting should keep happening. That is when life will become tasty. You see, रोज मैं आपको रोज पाव भाजी खिलाऊंगा, आप उस पाव भाजी से भी बोर हो जाएंगे. यस, मैं आपको रोज पाव भाजी खिलाऊंगा तो आप रोज उस पाव भाजी से भी. सो इट इज़ नॉट अबाउट, अरे मैं आपको रोज पाव भाजी खिला रहा यार, इट इज़ नॉट अबाउट पाव भाजी, इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ हर रोज. यू वोंट बिलीव इन द
2 years of lockdown, one of our devotee friends, very senior to me, he's from Satara. So just immediately after lockdown, he had come to Sakhali for doing some puja. So he called me and he said, Shyam Rasik, you know, my son is telling me, Papa and Mama, I love you very much. But last 2 years I am seeing only you and I have got bored of you. 2 साल से आप ही को देख रहा हूँ यार, बोर हो गया मैं. And I understood him. He's saying, I understood him. I said, भाव तेरे को तेरे मामा के पास लेके चलता हूँ, चल. So now while coming from Satara, I dropped him at his mama's place at Belgaum. And while going back from this puja, I'll be picking him up and again going. So it is not about what, it is about repetition. So new experiences carry momentum. Keep your life new. And get a lifestyle counselor. How can things be done best? We all have a comfort zone. हमें कुछ नहीं करना है, आराम से सब चलता रहेगा. लेकिन हम जब उसके बाहर निकलते हैं ना, तब उसको करेज जोन कहते हैं. जहाँ पे थिंग्स माइट नॉट बी द बेस्ट, आई माइट नॉट बी बेस्ट प्लेस्ड, I am shaky, but it can give new results. Nothing new happens in comfort zone. Nothing achievable happens in comfort zone. No success story is created in comfort zone. And we all cherish our comfort zone. We don't want to come out of it. But life won't get stable in comfort zone. We must step out of it and come to courage. दिखाना पड़ेगा. अरे मर्द है ना, मर्दानगी दिखानी पड़ेगी. यस, जब तक मर्दानगी नहीं दिखाएगा तब तक जिंदगी में कुछ नहीं होगा. यस, we spend our time in two ways: doing urgent things that demand our immediate attention, and doing important things that really matter to us and satisfy us the most. So urgent and important, दो चीज़ें हम अपने जीवन में करते हैं. जो मुझे सही में अच्छा लगता है वो करते हैं, और जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा वो चीज़ करते हैं. So urgent and important. So we see our life and our time can be divided into these 4 quadrants: quadrant of action, quadrant of quality, quadrant of deception, and quadrant of waste. Yes. What is urgent and important, do it. You have no option. What is important but not urgent, plan it. Yes. Well planned is half done. What is urgent but not important, negotiate it or delegate it. It is urgent but it is not important, किसी दूसरे को दे दो, कोई और कर लेगा. And what is not urgent and not important, bin it, कचरे में डाल दो उसको. सो ये दो चीज़ें अगर हम समझेंगे ना, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस. यस, एक एक्सिस है अर्जेंसी का, एक एक्सिस है इम्पोर्टेंस का. ऊपर इम्पोर्टेंट, द एक्स एक्सिस इज अर्जेंसी एक्सिस, द वाई एक्सिस इज इम्पोर्टेंस एक्सिस. यस, द अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. सो इम्पॉर्टेंट था, पहले नहीं किया, अब अर्जेंट हो गया. इसका मतलब क्या है? हम प्रोक्रेस्टिनेटर हैं. आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों. यस, क्योंकि हमने क्या देखा? इट इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. सो अगर इम्पॉर्टेंट था तो अर्जेंट होने तक रुके क्यों? प्लान क्यों नहीं किया?
मतलब हमने प्रोक्रेस्टिनेट किया. आर यू विथ मी? सो प्रोक्रेस्टिनेशन पे अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में देयर इज स्ट्रेस, देयर इज एंजाइटी, देयर इज बर्नआउट एंड समहाउ वी पास मीडियोकर परफॉर्मेंस. और बाद में हम डींगे हाँकते हैं, तेरे को पता है क्या डिफिकल्ट एग्जाम था, 50 मिला, पता है 50. अबे गधे, तेरे पास 2 महीने थे. यस, क्यों वाट लगाता हुआ फिर रहा था? यस. सो बर्नआउट, मीडियोकर. यहाँ जब हम इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यू हैव इम्पॉर्टेंट थिंग, it's not urgent, then you can plan it. So when I plan, what is it? Planning means I have control over my life. Planning means I have balance. क्योंकि किस दिन मैं क्या करूँगा, किस समय, कितने समय तक, I have a balance. And that is when I can give good performance. Are you with me? जब मैं अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट की बात करता हूँ, यस, डेलीगेशन की, देन रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ प्लीजर, लैक ऑफ डिसिप्लिन. अरे ये अपना काम हमेशा दूसरों को ही देता रहता है, मतलब डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में. खुद का काम खुद करना चाहिए ना, दूसरों को क्यों देना चाहिए? सो दूसरा क्या बोलेगा? फीलिंग लाइक अ डोरमैट फॉर अदर्स टू वाइप देयर फीट ऑन. तो हम अपने लिए नहीं प्लान कर रहे हैं, कोई दूसरा हमारे लिए प्लान कर रहा है, और हमें लग रहा है यार मैं अपना कुछ कर ही नहीं रहा, वो जो बोलता है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ. सो आई फील लाइक अ डोरमैट. हर कोई आके पैर पहुँच के जाता है, यार ये क्या है? एंड द स्लैकर, नथिंग अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी डूइंग, मीन्स लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेकीनेस एंड गिल्ट. Yes. So, quadrant of action, quadrant of quality, quadrant of deception and quadrant of waste. Quadrant of action, crisis में हम action में आ जाते हैं, option ही नहीं है. Pressing problems, I'll share with you the entire PPT, don't worry, it's already there, don't worry, don't take, I'll share the entire PPT. Exam tomorrow, quadrant of action. Friend for work, quadrant of action. Yes. कार ब्रेक्स डाउन, दीज आर ऑल क्वाड्रेंट. आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है. क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, ओ प्लानिंग, गोल सेटिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्लानिंग, रिक्रिएशन, यस, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन, ऑल दिस कैन बी प्लान्ड. इट इज इंपॉर्टेंट, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. देन क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, यस, quadrant of deception, not urgent. Yes, it is not urgent, not important. It is urgent but not important. So interruptions or unimportant phone calls, other people's problems and peer pressure, they are actually not important. अब हमारा क्लास फ्रेंड है, वो 75% लाया, मैं 70 लाया, अरे क्या हो गया, अगली बार और मेहनत कर लेना, आप 80 ला देना. लेकिन हम उसमें क्वेश्चन में चले जाते. यस, अदर्स पर्सन्स प्रॉब्लम, उसको क्या प्रॉब्लम है, अरे उसकी प्रॉब्लम वो देखेगा, आप पहले अपनी प्रॉब्लम थोड़ी तो सुलझाओ. यस, मेरी ज़िंदगी हवा में लटक रही है और मैं दूसरों के लिए सब कुछ करते हुए घूम रहा हूँ. Yes, it makes sense. It doesn't make sense at all. Yes, and not important and not urgent. Unimportant mail, time wasters, useless phone call, too much TV. Yes, excessive computer games, mall marathon, time wasters that include all social media today. Yes. So how do I handle time? Shrink Q1. What is Q1? First quadrant. Quadrant of action. Action कम करो by proper planning. Procrastinating कम करो. Yes. Quadrant 2.
एक्चुअली हमें क्वाड्रेंट 2 में रहना है, wherein I do things which are important but not urgent. I have time to execute them. If I keep my life here in quadrant 2, that's the best. If I go to quadrant 3, say no to these activities which are simply quadrant of deception. You feel it is important but actually it is not important. That's why it is deception. आपको लगता है, yes, and just cut down on Q4. Now, of all the things that you have written in your paper, big rock, medium rock and sand, I want you to put them in these quadrants. Please do put. जो आपने खुद लिखे ना उसी को लेकर के आप ये क्वाड्रेंट बनाइए और इसमें से आपके लिए कौन सा Q1 में है, Q2 में है, Q3 में है और Q4 में है, आप लिखिए. And please do it very diligently. This one sheet will change. If something has to change from this seminar, it is this sheet that's going to change it. So please work very diligently, and whatever you have written as big rocks, small rocks and sand, divide it into these 4 quadrants, and you may add things also if you wish. You may add things in these 4 quadrants that you feel are important from your own side also, something that you have not written previously. लैपटॉप खराब हो गया है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? लैपटॉप हैज़ ब्रोकन डाउन, नीड्स टू बी फिक्स्ड, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 1. 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट 2. यस. गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, क्वाड्रेंट. खुश हो गया मैं सुनकर. ये बोलने के लिए भी दिल चाहिए, तू मर्द है. यस यस. एंड अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट. यस. कल एक क्लास टेस्ट है और फ्रेंड पार्टी के लिए बुला रहा है.
You understood? Yes. Is this okay? Yes. So we might, so please keep these two papers very handy. ये big rocks, small pebbles and sand. This you can add on when you go home. And even when anything strikes you, अरे ये करना है, you can still classify it in these 4 quadrants and see how you operate. And over a period of time, try to shift your focus more to quadrant 2. Yes. Urgent or important? Emergencies. Urgent and important. Web surfing. Neither urgent nor important. Planning. Important but not urgent. Telephone calls. Urgent but not important. Yes. Emotional issue. जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे. Yes. Emotional issue. Which quadrant? Now I see. No unanimous answer. Everybody is thinking कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस करूं टूटे हुए दिल को. टूटे हुए दिल को कहाँ प्लेस करूं. ठीक. मंडेन टॉक. विच क्वाड्रेंट? 4th. मिनट. रिकग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज. यस. हार्ट अटैक. वेरी गुड. ईमेल्स. Majoritarily 3rd. Health. अभी तो अच्छी है ना. You are not in your 50s that it goes to 1st. Now it is in 2nd. You can plan for your health. None of you has diabetes. None of you has pressure. Yes. Crisis 1st. Distraction 4th. Very good. Escape activities 3rd. Educational study 1st. And a good amount 2nd. But if it is 1st, it can be 1st also. Urgent time bound order for supply 1st. Self development 2nd. Interruptions 3rd or 4th. Majoritarily 3rd. Prevention 2nd. Prevention is 2nd. Yes. You need to give due attention to prevention. कि कहीं गड़बड़ ना हो. Prevention is better than cure. So preventing something, preventing a gadbad is always in quadrant 2. Unexpected visitors 1. You have to know Atithi Devo Bhava ultimately. Yes. Recreation 2nd. It is important. Meetings 3rd. Yes. If you can. You see, it depends on the subject of meeting also. Yes. अगर कॉलेज के क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट के लिए मीट है तो वो 2nd है. और गर्लफ्रेंड से मीट है 4th. Yes. Many pressing matters 1st. TV 3. ठीक है 3. As long as you are watching with your parents, I trust you. If you are not watching with your parents, then it is 4. Deadlines, pressing problems
Relationship build up. Junk mail. Good. You have understood the quadrants. So shrink quadrant 1. Say no to quadrant 3 and cut down on quadrant 4. Focus on. They are important but not urgent, and they can be built up. So quadrant 1 इस तमोगुणा, हमेशा अर्जेंसी में भागता रहता है. तो अब तक क्या सो रहा था? तमस. Always a procrastinator. The prioritizer, yes, he is in sattva. The yes man, always a go-getter, rajas, उसको चाहिए energy. And the slacker is in tamas. So we see the procrastinator, quadrant 1 and quadrant 4, both are in tamas. Quadrant 3 is rajas and quadrant 2 is sattva, the best. Yes. So quadrant 2 is the best, quadrant 3 is next, and quadrant 1 and 4 is equally bad. Are you with me? Okay. So brains are like muscles. So they grow with use. आप जितना ब्रेन को यूज करेंगे उतना ग्रे सेल्स बढ़ेंगे. आप जितना ग्रे सेल्स को स्टैक रखेंगे उतना ग्रे सेल्स डिप्लीट होंगे. एज सिंपल एज दैट. क्या क्या है जो हमारा समय ले करके जाता है? यस. लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आर लॉस्ट. यस. ऐसा था उस समय मैंने ये किया होता तो, अरे उस समय किया होता तो अब क्या फ़ायदा, चला गया समय. यस. लेजीनेस. यस. हैव मोटिवेशन. सो इफ वी आर लुकिंग टूवर्ड्स थिंग्स दैट आर लॉस्ट, थ्रू इट. उस यादों को पकड़ करके मत रखो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका. अगर बहुत लेजी हो रहे हैं तो कुछ मोटिवेटिंग सुनिए, कुछ मोटिवेटिंग करिए, मोटिवेटिंग लोगों से मिलिए. बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस आ रहे हैं तो वो इंटरप्शंस हमेशा ही क्यों आ रहे हैं, उसके ऊपर काम कीजिए. ट्राइंग टू कैरी द लोड बाय योर सेल्फ. लर्न टू वर्क विद पीपल एंड से नो. यू नीड नॉट बी अ येस मैन एवरीवेयर. Learn to say no. Yes, regretting and daydreaming, procrastination and not listing priorities, it makes us waste our time. So, weekly planner, schedule and estimate, evaluate and reschedule, evaluate and reschedule. आपने कुछ प्लान किया, शेड्यूल किया, लेकिन उस हिसाब से कुछ हो नहीं पाया. क्वाड्रेंट 2 में कोई क्वाड्रेंट 1 एक्टिविटी आ गई, क्या कर सकते हैं? रीशेड्यूल. यस. एंड अ हैंडी पॉकेट डायरी इज ऑलवेज बेस्ट. और टुडे यू कैन डू इट विथ योर कैलेंडर ऑल्सो. हाँ, हर एक के मोबाइल में कैलेंडर है. सो कैलेंडर में थिंग्स टू डू, टास्क, रिमाइंडर, इवेंट्स, वो सब होता है ना. सो कीप फिलिंग इट. यू डोंट लूज ट्रैक. Yes. So life is about all these 6 things: physical, spiritual, mental, friends, family and fine. इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया, हरी बोल हो जाए. Yes. इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया तो हरी बोल हो जाएगा. First I was dying to finish school and start college. Then I was dying to finish college and start working. Then I was dying to marry and have children. Then I was dying for my children to grow. And now I am dying. Yes, this is our life. Correct or no?
That's the irony of our life. We keep dying. In the pursuit of dying for something else, I forget to live. Life is for living. Yes. So the last words spoken by famous people at death, shortly before dying. I am bored with it all. जितना जीवन में किया, बोर हो गया. Before slipping into coma, he died 9 days later. Winston Churchill. Winston Churchill, Google out who's Winston or Wikipedia पे डालो. The man the entire United Kingdom respects and reveres. He was the one who steered the entire United Kingdom through the Second World War against Nazis, Hitler. He is practically the hero of England, and at a time when English Empire was everywhere. ऐसा नहीं कि आज जा इंग्लैंड को कोई पूछ ही नहीं रहा. इंग्लैंड ने पिछले 3 साल में 4 प्राइम मिनिस्टर्स देख लिए. ऐसे समय में नहीं है इंग्लैंड, ब्रेक्सिट के साथ में वो झगड़ा कर रहा है. This is where British Empire was. The sun never sets at the British Empire. You go to east, you go to west, everywhere there is British Empire. That time Winston Churchill was there, and at the time of dying he says, I am bored. Then Cassandra is saying, nothing, I want only death. Yes. So essence is that we learn how to live. Yes. And that can be done with managing and understanding the importance of this one priority, one commodity that God has given us, time. We have only one thing that is perfect with us. जब आते हैं एक ही चीज़ फिक्स है, कितनी सांसें लेंगे उतना ही फिक्स है. बाकी कुछ फिक्स नहीं है, बाकी सब चलता रहेगा परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे. यस. सो जो एक चीज़ फिक्स है, कितनी सांसें लेंगे मतलब कितना समय यहाँ बिताएंगे, अच्छे से बिताइए. एंड मेक श्योर यू आर देयर एट all these levels. Thank you very much. Hare Krishna.